Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed pure substances, and now we are going to discuss other than pure substances. When we talk opposite of purity, we call it mixture. Again I repeat, other than purity it is called mixture. Correct? Now proceed it. When a substance contains more than one type of a particle, it is known as a mixture. For example, Different particles salt में एक साथ. solution is made तो up mixtures of कहे two जाएंगे ना? components, Salt salt क्या है? and water. Salt plus Therefore, water. देखो salt salt solution solution is ये a mixture हुआ. mixture. There are over 100 known elements on Earth. सारे सारे एलिमेंट हैं जो कि प्योर फॉर्म में हैं. A pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simpler substances by physical or chemical means is referred to as an element. एलिमेंट प्योर होता For है जिसको हम example, बाकी और किसी iron, भी सब्सटेंस तोड़ नहीं सकते. gold and आयरन है, silver. गोल्ड है, सिल्वर, ये सब प्योर फॉर्म में है. मेटल जब बोलेंगे How pure. does one identify the elements? Do they have any typical properties? Yes, they do have typical properties. Suppose Let's look at some of the characteristics of elements. An element is homogeneous in nature. It is a pure substance made up of only one kind of atom. जब भी हम एलिमेंट की बात करेंगे तो मेन प्रॉपर्टी आती है एलिमेंट्स आर होमोजीनियस. होमो मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. होमोजीनियस जो कि कैसे हैं मिलेंगे? होमोजीनियस हर जगह. यानी कि आपने आयरन के इस टुकड़े को देखा, इतने पार्ट को देखा, आपने आयरन के इतने पार्ट को देखा, तो आपको सब जगह इतने इस टाइप के एटम्स मिलेंगे. यानी सारे के सारे आयरन एटम क्या होंगे? आयरन के ही एटम्स होंगे. जितने पार्टिकल की बात करोगे वो आयरन के ही पार्टिकल्स होते जाएंगे. आप इतने टुकड़े को देखें, इतने को देखें, आप पूरे को देखें, यानी कि पूरे के पूरे सिल्वर या पूरे के पूरे आयरन में जिसको भी आप देखेंगे, जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, उसमें सारे के पार्टिकल कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए. When the entire length of the bar of any metal or anything, all the particles are same of the one kind are called as homogeneous in nature, and these are pure. Now, For example, iron and silver are made of only iron and silver atoms. An element cannot be broken down into simpler substances by any physical or chemical methods, Note it down. such as heat, light, electricity, or chemical reactions with other substances. For example, if you were to smash a piece of iron into small pieces or heat it, the piece still remains as the element iron. correct. An atom is the यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, सपोज करो हमने आयरन की रॉड ले ली. आयरन की रॉड को हम कितना भी तोड़ेंगे उसका हर एक टुकड़ा आयरन का ही होगा. ऐसा नहीं कि वो स्प्लिट होने के बाद वो सिल्वर बन जाएगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आयरन के हर एक टुकड़े आयरन ही रहेंगे. यानी कि जितने भी टुकड़े आयरन के जितने भी पार्ट्स होंगे, इसको पीटने पर, उसको स्मैश करने पर, वो सारे पार्टिकल्स में आयरन के ही एटम्स होंगे. तो उसे क्या बोलेंगे? वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है. तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. करेक्ट. तो एटम जिसको हम बोलते हैं वो किसी प्योर एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है. करेक्ट. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्योर एलिमेंट. इज इट? नोट इट डाउन. smallest unit that shows all the properties of an element. For example, an atom of iron shows all the properties of that metal. Elements have sharp melting and boiling points. For example, aluminium has a boiling point of 2447 degrees centigrade. Elements can be classified into three classes: metals, non-metals, And and metalloids. metalloids. Hey, chocolates. Did you observe they were wrapped in aluminium foil? Not only chocolates, but biscuits and medicines are wrapped in aluminium foil. Why is that so? This aluminium is a metal. Over 80% of known elements are metals. मेटल्स हैं. Let's see मैक्सिमम what जो भी metals आपके are अर्थ में है. and their properties. Metals are the elements which readily lose electrons to form positive ions or cations. राइट. तो जिसे आप मेटल्स बोलते हो, बेसिकली मेटल क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जिनको भी हम मेटल बोलेंगे. आपके देखो पीरियोडिक टेबल में
पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी पार्ट जो भी है वो क्या है, मेजॉरिटी एलिमेंट्स क्या है, वो मेटल्स हैं। और मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है M से M प्लस बना देने की। जब भी आप बोलते हो M से M प्लस बन गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सो एज टू गेट स्टेबिलाइज्ड, ऑलवेज so as to get stabilized it loses the electron, right? And why is that so? Suppose I am taking the example of magnesium having atomic number 12. When we just do the electronic configuration, we write it 282. And why is that so? When we write it 282, every magnesium or every element wants to have its octet complete only, means the outermost shell contains only 8 electrons, not the 2. What it will do, it will just lose these 2 electron and it will become Mg plus 2 ion, right? When it will become Mg plus 2 ion, it is more stable than Mg itself, is it? So metals they just lose electrons and they get Example, stabilized. Sodium, an Sodium ion alkali देखें, metal, loses an electron and forms सोडियम, अभी ये क्या है, राइट, ये सोडियम मेटल है। सोडियम ने क्या किया, अब रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, देखो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। दिस इज सोडियम, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे 2,8,1, अभी कॉमा 1 है ना, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने पर लास्ट में 1 2 3 आए, तो 1 2 3 जितने जिनके भी लास्ट में होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करके लास्ट में क्या बना देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना हो गया 2,8। नाउ 2,8 इज मोर स्टेबल देन 2,8,1। नाउ दिस सोडियम Na प्लस इज मोर स्टेबल देन Na itself, राइट? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो पूरा बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर ये वाली, करेक्ट? Na becomes Na plus and electron is loosed, right? Now let's discuss positively charged sodium ion. Let's observe some of the properties of metals. metals की properties Metals क्या है? have luster. luster है, चमक होती है When इनके अंदर। freshly cut, they show metallic luster. metallic luster होता For है, example, चमक होते हैं, चमकते हैं gold. वो दूर से ही। Metals Gold are को good दिखाया। conductors of heat and electricity. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो कंडक्टर्स As होते हैं metals have free electricity के। electrons in them, they are able to conduct heat and electricity. yes, हीट भी कंडक्ट होगा उसके। For example, copper. Metals are malleable, meaning को आप they can be hammered into thin sheets. शीट्स बना सकते हो, For example, टैक्टाइल भी है, इनको वायर में aluminium. कन्वर्ट कर सकते हो। Metals are ductile, which means they can be drawn into wires. वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स For को। example, copper. राइट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ Metals मेटल्स। are sonorous. They साउंड होती give है a मेटल्स में ringing अपनी एक sound when स्पेशल they're साउंड hit by होगी। a hard iron rod. For example, Sonorous means copper. sound. Almost all metals are solids except mercury, which is a liquid at room temperature. नोट इट डाउन। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है ना? इसका मतलब वो किसी न किसी टेम्परेचर में सॉलिडिफाई होता होगा, इज इट? याद रखेंगे, मरकरी एक रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेमी मेटल, नॉट द कंप्लीट मेटल, राइट? बट इट इज एक्चुअली having metallic property rather than states. Just don't say the state is liquid. No, it is a metal, but at room temperature it looks like liquid.